जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ शोर तुराबी, एक्टिंग हेड ऑफ रिसर्च, और सैयद शबीहुल हसनैन, इक्विटी फंड मैनेजर मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू शोर। Assalamu alaikum, everyone. Obviously, we'll be covering the month of September in this outlook. We'll be going through all the developments that the market has witnessed, और उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। आफ्टर अगस्त, जिसमें मार्केट ने थोड़ा सा डिप लिया था, सितंबर के मंथ में मार्केट ने काफ़ी बेहतर, रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया था। जिसके दो प्राइमरी रीजंस थे। एक तो थोड़ा सा जो पॉलिटिकल लेवल पर जो अनसर्टेनिटी थी, दैट वाज कमिंग टू मोर स्टेबल एनवायरनमेंट। सेकेंडली, एट द आउटसेट ऑफ सितंबर हमने देखा कि जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट, जो हमारा एक्सचेंज रेट के इन दोनों रेट्स में जो डिफरेंस था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो वी वर गोइंग बैक टू द डिफरेंसेस दैट वी यूज्ड टू हैड प्री आईएमएफ। सो हमने हमने स्टार्ट में देखा कि ओपन मार्केट जो है वो अराउंड 325 टू 330 पर डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, जबकि इंटरबैंक वाज क्लोज टू 305, राइट? एंड सो this was, uncertainty was causing not very it was not very encouraging for the investors. So market जो है वो उसको बहुत अच्छे से वेलकम नहीं कर रही थी, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट शुरू के एक वीक में ही अथॉरिटीज केम इनटू एक्शन। स्टेट बैंक ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए, जिसमें उन्होंने एक्सचेंज कंपनीज को रेगुलेट करने का स्टेप लिया। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक्शन में आ गए। उन्होंने स्मगलिंग को रोकने के लिए काफी अग्रेसिव इकदाम उठाए, जिसमें बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को इंक्रीज किया गया ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके, जिसमें ना सिर्फ एक करेंसी की स्मगलिंग थी बल्कि कमोडिटी की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। सो हमने उसके बाद देखा कि फौरन ही इन स्टेप्स के बाद स्टेबिलिटी एक नजर आई हमें एक्सचेंज रेट में। और उसके बाद फिर जो डिफरेंस था इंटरबैंक और ओपन मार्केट का, एज यू नो इज ऑलरेडी बीइंग डिपिक्टेड बाय द ग्राफ, वो काफी नैरो होता चला गया। एंड मार्केट ने भी उसको जाहिर है वेलकम किया, और मार्केट सितंबर के मंथ में मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। इसके बाद फिर यूएस डॉलर के एंड पर भी हमने देखा कि इंटरबैंक का रेट जहां 307 रुपए का हाई बनाया था अगेंस्ट डॉलर, 287.70 पर क्लोज किया इन द इंटरबैंक मार्केट, विच वाज अराउंड 6% गेन और month on month appreciation against the greenback. If you could move on to the next slide, please, Tanvisa. G, in the month of September, Monetary Policy Committee of the State Bank decided to keep the interest rate unchanged, maintain the status quo. This was an unexpected move क्योंकि इस मीटिंग से थोड़ा पहले ही जो ऑक्शन हुआ था टी बिल्स का, उसमें जो कट ऑफ रेट्स थे वो दे विटनेस्ड अ सर्ज of significant numbers, right? So जो कट ऑफ यील्ड्स थी वो काफी ऊपर तक चली गई थी, जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपेक्टिंग basing their thesis on empirical evidence that interest rates should be increasing now in the upcoming monetary policy. But to everyone's surprise, the Monetary Policy Committee of the State Bank of Pakistan decided to maintain the status quo. इसमें जो उनका स्टांस था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो काफी इंकरेजिंग था। उनका ये कहना था कि जो ब्रॉड बेस्ड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं, दे आर इन लाइन विथ व्हाट स्टेट बैंक्स एक्सपेक्टेशंस आर, राइट? सो वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। दे सेड कि इन्फ्लेशन जो है वो आफ्टर a peak in the month of May, इन्फ्लेशन जो है वो वहां से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी in line with SBP's expectations.
they are still expecting the average inflation of around 20 to 22% for FY24, which, by the way, we think that this number might be a bit higher than what the SVP is expecting. Nevertheless, SVP का ये stance था कि inflation is going down, current account deficit is in line with what they were projecting. First quarter का current account deficit, we'll talk a bit about in detail regarding the current account deficit in the upcoming slides, but just to throw some light on it, around $950 million का current account deficit record किया गया है in first quarter of fiscal year 24, which is again in line with SVP's expectations. So SVP का comment or the monetary policy committee का comment ये था कि there has not been any surprises or hiccups which made them see the need to increase the policy rates any further. So they decided to keep the rates unchanged, and obviously they said that monetary tightening and fiscal consolidation is continuing. These two steps are obviously needed. Furthermore, उन्होंने एक और चीज जो कही, which is worth mentioning, is that their inflation expectation is likely to be supported by the administrative measures that are being carried out at the national level, right? Actions to curb smuggling will help, and we have seen it help strengthening our exchange rate, which will eventually be translated into better inflation numbers. So yeah, so talking about inflation, the month of September, we saw an inflation, year-over-year inflation of 31.4%, as we have been expecting it to be higher than 27%, which was recorded in August, primarily because of the low base effect that was set in September 22. Going forward, we believe कि जो 31% का जो number आया है inflation का, that's this is the peak, and going forward we expect कि downward trajectory will be continued in the CPI, and which is also what the SBP was expecting when they decided to keep the monetary policy rate or policy rate unchanged. Key contributors to this month's inflation were food items, because we know that food has the highest share in the CPI basket, and then increase in electricity tariffs. We saw a couple of rounds of increases in the petroleum prices in the month of September as well. So that also contributed to the inflation. The core inflation was recorded at 23.5%. Or 23.8%. And as I said, the high base effect of last year is expected to ease out the inflation in the coming months. And we expect an average of around 25% for fiscal year 24. Talking about the current account, September के month का current account was $8 million. It was a deficit. Primarily, we have seen improvement in the current account month over month and year over year because of favorable decline in the trade deficit. We have seen a month-over-month increased number of remittances of around $2.2 billion in the month of September, against $2 billion in August. However, the market was expecting a bit more than that, but we expect the remittances number to be even better than $2.2 billion in the month of October, for the month of October. Obviously, for the full fiscal year, we believe that the current account deficit will remain contained. It will not swell to the FY22 levels. It will, however, be over or a bit higher than FY23, but it will not be too much higher than those numbers. We expect it to clock in at around in between $5 to $6 billion for the year.
and we expect remittances now should be posting healthy growth because the conversions of rates in the open market and interbank should encourage the foreign expatriates to to remit further or even more money into the country through proper and legal channels. Uh, Talking about the tax revenue, IMF का जो first quarter का tax revenue का target था, it was around 2 trillion or just under 2 trillion, which the FBR has achieved and has exceeded the target by 64 billion rupees. So we expect कि जो upcoming IMF review है starting early November, we have almost met all of the benchmarks as set by the international lender, right? यही बात जो है वो SBP के गवर्नर ने भी अपनी प्रेस रिलीजेस में वो उन्होंने की थी कि हमने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टारगेट्स जो IMF के थे वो हमने पूरे कर लिए हैं. So the upcoming review should not be, a difficult one. However, जो हमारा next target है, वो it is around 2.5 trillion rupees for the next quarter. This will obviously require increased efforts by the FBR to achieve. And but we believe that even this number should not be too much difficult to achieve for in the December quarter. Right. So talking about the exchange rate, internationally, US Fed has held the rates unchanged, but they have signaled another increase by the year end. Policymakers are now expecting policymakers are now expecting a peak of 5.5 to 5.75%. And a tighter than previously anticipated stance in 2024. Locally, after seeing a high of 307 against the greenback, administrative measures have helped the local currency or PKR ने against dollar appreciate किया, by closing of September, and that also continued till October. डॉलर इंडेक्स जो है वो 106 के करीब होवर कर रहा था बाय द एंड ऑफ सितंबर, क्योंकि ऑब्वियसली a tighter stance by the Fed would mean increased interest rates and strengthening dollar against other currencies. हमारा real effective exchange rate clocked in at 91.7 for the month of September. And if you could move on to the next slide, the news up. जी मैं एक सेकंड जी is it the next one? Yeah. Okay. So, to talk about the market and fundamentals of the market, we have Mr. Shabiul Hasnan here. He is our equity fund manager. So, over to you, Shabiul. Assalamu alaikum. So, as you can see that market cap to GDP of the PSX is like very low if we compare it to the average of like last 18 years from 2005. So currently it's at 7%, which is obviously you can see how cheap the market is as if we compare market cap to GDP basis. And same is the case with price to book. The average price to book is obviously for the last 15, 16 years is obviously much higher than what is we have currently, which is 0.82. Similarly, market cap to GDP average, as we talked about, is obviously very low. And if we can compare it to like what is the current price to book and what was the average, so we can see that how cheap the market is trading. And because obviously the book values of the companies have gone massively up as they have been profiting a lot, but obviously the share hasn't performed in all these 10 years to 15 years. So we can see that how cheap the market is currently, basically.
So next slide, please. Okay, here you can see that what is the discount of MSCI emerging market and obviously frontier markets. What is the historical discount and what is the current discount? You can see that current discount is obviously much higher than what is the average discount for last 15 years. Just to back it up for the point that we made earlier, that market is significantly cheap and obviously it has a lot of room to perform. The recent devaluation we have faced in last 5 years especially, and the index hasn't gone up, it has gone down actually. So basically this is the reason why we feel the market is so cheap. Market is the index hasn't moved at all and dollar has devalued. Companies have performed a lot. If you look at the earning what they have portrayed, the E&P sector, bank sector, and what they were trading in 2018 and what they are trading in right now. For example, HBL was around 315 to 320 rupees per share, and today it's at 95 and 90 to 98. And the book value has gone massively up in this between this, I think. And same is the case with all the other banks and E&P sector as well. So obviously we can obviously just these are all evidences of why market is trading so cheap. Next slide. As we can see, the price to earning ratio of KSC 100 to our funds. Our funds are relatively much lower in PE ratio as compared to KSC 100. So obviously this propels a summary for why our funds are really good to invest in. Why these are so cheap. So the price to earning is much lower than for especially our USF, URSF, and even ASSF is relatively cheaper as compared to the market. Same is the case with dividend yield. The dividend yield for USF is especially much higher than KSC 100 index at current levels of the market price. Obviously, if we look at how much banks are giving right now, current quarter banks have given really good dividends. And even in June quarter and even in September quarter, they did not used to give any dividend in this quarter, but they are giving currently. So that is a big surprise for the market. And obviously, as UFSF will perform quite well in that scenario. Next, please. Okay, so going forward, obviously, IMF review है next month in the month of November, early November. So we believe that ये वाला review should not pose much of a problem because as already discussed, we have met almost all of the targets. But it is imperative कि IMF के जो next quarter के और से next quarter के targets हैं वो भी हम meet करें. Because we really have to remain in an IMF program, especially this one, and we might even have to go for another program once this one concludes to help our external financial position. Furthermore, जो current administrative efforts की जा रही है to curb smuggling has bore fruit. हमने देखा कि PKR appreciate किया against the greenback and उससे काफी हमने देखा कि inflation पे भी काफी एक positive impact हमने witness किया, but still we don't know how sustainable these efforts are going to be, right? And obviously a future of these controls is yet to be seen. Right now, these obviously pose upside risks to any inflation forecasts that are there. So yeah, that's it from our side. Tanvi sir, if you have any questions, please. Thank you, Shaur and Raji. अच्छा, कुछ questions हैं जैसे
आपने बताया कि मार्केट कैप टू जीडीपी काफी लो है, लेकिन एक एक फिनोमेना और भी हम देखने को जा रहे हैं कि लार्ज कॉर्पोरेट्स डी लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे पाक सुजुकी अभी लेटेस्ट एग्जांपल है। सो ये ट्रेंड थोड़ा सा यानी हमारी मार्केट के लिए कोई अच्छा ओमेन तो नहीं है, मतलब कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ज्यादा है इन कंपनीज के लिए जिसकी वजह से एग्जिट कर रहे हैं, या कोई और वजह? I'm sorry, Tanvir sir, we lost you in the middle. आपकी आवाज अच्छा, जो है वो शायद थोड़ी ओके सी डिस्टॉर्ट ओके। थी। Could मेरा you please मेरा come again? सवाल सवाल ये था कि कुछ कंपनीज, इवन लार्ज कॉर्पोरेट्स लाइक पार्क सुजुकी रिसेंट एग्जांपल है, जो डी लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या जी। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस एक फिनोमेना है, या बेसिकली कोई और फैक्टर्स हैं? और ये ऑब्वियसली हमारी मार्केट की डेप्थ को और कम करेगा इस तरह के, अगर ये कंपनीज डी लिस्ट करना शुरू हो जाए। Okay, so talking about Park Suzuki, the company has specifically mentioned कि जो उनका रीजन है डीलिस्ट होने का वो ये है कि the company hasn't been able to pay any dividends for the last couple of years. And company ने कुछ losses भी किए थे पिछले कुछ quarters में, तो the company thought it is providing a fair exit to its shareholders, which obviously we know and we saw was appreciated by the investors. But we don't. I mean, although the cost of compliance is high in our market, but we don't really think that this is the reason the companies are getting delisted. In the case of Park Suzuki, or a number of companies have announced buybacks, right? जो रीजन हमें समझ आता है या जो कंपनी से फीडबैक लिया गया है और जो कंपनीज का एक स्टांस है वो ये है कि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं और कंपनीज भी ये बात जानती हैं इवन मोर सो देन अस के जो उनकी स्टॉक प्राइसेस है, जो उनकी उनकी कंपनी की प्राइस है, वो इस वक्त काफी चीपर लेवल पर ट्रेड कर रही है, राइट? सो इफ एन स्पॉन्सर थिंक्स कि उसे उसी का शेयर चीपर लेवल पर मिल रहा है, व्हाई वुडंट ही गो फॉर इट? सो कंपनीज का ये स्टांस है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा, पिछले कुछ मंथ्स में कि काफी सारी कंपनीज ने बायबैक अनाउंस किया, जिसमें लकी सीमेंट है, जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन है, जिसमें मेपल लीफ सीमेंट है, जिसमें अभी बैंक लिमिटेड है, एंड नंबर ऑफ अदर कंपनीज। सो obviously the management thinks that these companies are being traded fairly below their fair value or intrinsic value. So and eventually, obviously, these values will be there in the market. So right now, this is a good opportunity. If an investor is not doing it, why not the management ओके, themselves, ठीक right? है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ कुछ अरसे से हम कमेंट करते आ रहे हैं कि हमारे जो सेक्टोरल इक्विटी फंड्स हैं, यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर और यूबीएल, सॉरी, अलामीन इस्लामिक एनर्जी, ये काफी चीप वैल्यूएशंस पे इस टाइम इनके पोर्टफोलियो ट्रेड हो रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, इस स्लाइड में तो नहीं हम दिखा पा रहे, बट आई वाज जस्ट seeing the numbers. Alameen Islamic Energy Fund has delivered 32% return in the last 365 days, और ईयर टू डेट, फाइनेंशियल ईयर टू डेट यानी 1 जुलाई से 28.65%। तो 365 डेज पे इट इज द बेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। सिमिलरली यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड जो है, उसका ईयर टू डेट रिटर्न जो है वो भी हाईएस्ट है, 44.95%। ये एज ऑफ यस्टरडे की एनएवी का रिटर्न है। और लास्ट 365 डेज यानी एक साल का रोलिंग रिटर्न जो है वो 48% है, विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट इन द मार्केट। तो ये हम अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि ये हम काफी अरसे से ये चीज हाईलाइट कर रहे थे, एंड दिस थिंग हैज एक्चुअली स्टार्टेड मटेरियलाइजिंग। तो अभी भी Exactly. चीप वैल्यूएशंस हैं, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है इन दोनों पोर्टफोलियोज की, डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स हैं। So we do see further sort of positive returns in these two funds or general equity funds. Exactly. अच्छा, एक सर, थोड़ा इफ यू सा लुक एट इट, यूएफएसएफ में बेसिकली जो बैंक्स है ना, उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में सरप्राइजिंग डिविडेंड अच्छे डिविडेंड देना बच। शुरू किए हैं। हम्म। बिल्कुल।
तो इन्होंने जून में भी दिए, अभी अभी देखें सितंबर के रिजल्ट्स आए, उनमें भी डिविडेंड अच्छे दिए हैं बैंक्स ने। तो बेसिकली बैंक्स का ऑब्वियसली जितना वो कमा रहे हैं, वो तो सबको आइडिया था कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पहुंच गया है, तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम इतनी कहाँ आ जाएगी, कहाँ पहुंच गई। तो बेसिकली उन्होंने अब अपना, उनका ऑब्वियसली कार भी बफर अच्छा था, अभी इंडस्ट्री का बफर जो कार का है, तो उसमें उन्होंने बेसिकली जो पे आउट किया है वो एक अच्छा सरप्राइज है। और वो अभी रख है कि इस साल तक पूरा ईयर एंड तक भी अच्छा कंटिन्यू करेंगे। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यूएफएसएफ की परफॉर्मेंस में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल और था कि गैस प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने अभी शायद ईसीसी ने अप्रूवल दे दिया है, इसका इम्पैक्ट आप यूटिलिटी कंपनीज या जो ऑयल एंड गैस सेक्टर, इस पे क्या देख रहे हैं? सर बेसिकली गैस प्राइसेस ऑब्वियसली देर अ बिग वेलकम फॉर ओजीडीसी पीपीएल, जो हमारी टॉप होल्डिंग्स है हमारे मेन फंड्स में। ऑब्वियसली उनके जो कैश फ्लोज थे, अगर पीपीएल है वो कमा रहा है 60 रुपए, तो उसके 60 रुपए से ज्यादा ही फंस रहे थे ट्रेड डेट्स में आके, ऑब्वियसली उसको मिलते नहीं थे। लेकिन ऑब्वियसली गैस जो प्राइसेस बढ़ी हैं, उससे उनका जो स्टक अप हो रहे थे ना फंड, ऑब्वियसली जो सब्सिडी के तौर पे वो स्टक अप हो रहे थे, जो मिलते ही नहीं थे, वो बेसिकली वहां से वो जीडीएस ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो डेट में वो पूरा चेन में पैसे फंस रहे थे, वो बिल्कुल हमें लग रहा है गैस प्राइस के बाद, इंक्रीज के बाद वो नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी, वो सारे मिल जाएंगे इनको। तो इनके लिए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है ये। अगर ईएनपीस की मैं बात करूं, ओनली ओजीडीसी पीपीएल और एसएनजीपी के लिए भी ऑब्वियसली अच्छा है, बट ऑब्वियसली वो इतना डायरेक्टली लिंक नहीं है जितना ओजीडीसी पीपीएल के लिए। तो हमारे एआईईएफ, हमारे जितने मेन फंड है उसमें तो ऑब्वियसली हम सबसे ज्यादा एक्सपोजर आपको अच्छा वहीं मिलेगा। और दूसरी चीज है कि जो गैस प्राइसेस से, अगर एक तो ये बात हो गई इन एनर्जी कंपनीज की, जो दूसरा एक फैक्टर है वो ये है कि जो लोकल जो सिंध में जैसे इंडस्ट्रीज है ना, जैसे शब्बीर टाइल हो गया या छोटे छोटे बहुत स्टॉक हो गए, वो जिनको सिंध की गैस मिलती थी 1200-1300 MMBTU पे, तो उनकी प्राइसेस तो डबल से भी ऊपर हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली फॉर सम कंपनीज इट्स क्वाइट नेगेटिव, the impact is very negative for some companies, but obviously for the generating companies, for exploration companies, this is a very welcome step for in the energy chain. This is a very good step. So obviously the जो गैस प्राइसेस, ऑब्वियसली एक उसका फेज हो गया है पूरा, उसका एक अप्रूवल हो गया है ईसीसी का, अब उसका कैबिनेट का अप्रूवल है। तो कैबिनेट का अप्रूवल होगा, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। तो जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हो जाता है, फिर वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन प्ले आएगा, वो 1 नवंबर से आ जाएगा एमपी गैस प्राइसेस। तो दिस वुड बी अ मेजर चेंज फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जो हमारी ओजीडीसी पीपीएल है। ओके। अच्छा, एक ये मेरा सवाल था रियर पे। रियर आपने दिखाया कि ये सितंबर का नंबर है 91.7, जी लेटेस्ट नंबर जी है। जी तनवीर, दीज ऑल आर एंड सितंबर बिल्कुल। नंबर्स। अच्छा, इसकी बेसिस पे और आपने जो फोरकास्ट की, फोकस तो नहीं मैं कहूँगा, बट एक एक अजम्पशन थी कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इंपोर्ट्स थोड़ी लोअर एंड पे ही रहेंगी। तो आपके ख्याल में वो जो स्टेट बैंक ने थोड़ा एक मोरल पर्सुएशन पे बैंक्स को कहा हुआ है कि नॉन एसेंशियल गुड्स की एलसीज वगैरह ना खोलें, वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ईयर में भी? अच्छा, नहीं तनवीर साहब, एक्चुअली स्टेट बैंक ने जो है वो इन द मंथ ऑफ जून अपॉन आईएमएफ्स रिक्वायरमेंट, वो जो एक उनका सर्कुलर था जिसमें उन्होंने बैंक्स को कहा था कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे इंपोर्ट्स को, उन्होंने वापस ले लिया था। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स एज पर स्टेट बैंक्स डायरेक्टिव। बट वी बिलीव कि क्योंकि जाहिर है एग्रीगेट डिमांड हर्ट हुई है इतने हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में, ऑब्वियसली डिमांड जो है वो नेचुरली हर्ट होगी, और हमने देखा कि हो भी रही है। एलएसएम के नंबर्स हम देख रहे हैं कि शुरू के क्वार्टर्स में पिछले कुछ मंथ्स में वो नेगेटिव भी रहे हैं। नंबर वन, नंबर टू, दिस सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन ऑफ पीकेआर अगेंस्ट द यूएसडी इन द लास्ट मंथ्स, उन्होंने इंपोर्ट्स को मजीद महंगा कर दिया है, राइट। सो इस वजह से हमें लगता है कि इवन दो एसबीपी इज नॉट एक्चुअली इन्फोर्सिंग or not explicitly enforcing these prioritization of imports now, but उसके बाद भी we expect कि imports जो है वो relatively कम ही रहेंगी in this year as well. अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा, हमारी क्योंकि मार्केट काफी सेंटिमेंट बेस्ड भी चलती है, तो आपके ख्याल में इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस हो जाती है इन द नियर फ्यूचर, तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आप देख सकते हैं? क्योंकि जनरली हिस्टोरिकल ट्रेंड यही रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे
मार्केट्स आमतौर पे हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। तो आपका देखिए क्या व्यू है? इलेक्शंस ऑब्वियसली अभी अभी भी थोड़ा लोगों को डाउट रहता है, बट ऑब्वियसली इलेक्शंस है ना, वो देर अ बिग वेलकम चेंज फॉर द मार्केट। उसमें यही है कि एक जब इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली उसके साथ प्लान्स वगैरह भी आते हैं, लोगों के जो बाहर के कंट्रीज हैं उनका कॉन्फिडेंस आता है। तो वो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, उसके फ्लोज कनेक्टेड होते हैं चीजों के ऑब्वियसली। जैसे वो काफी बार हमें ऐसा शायद सामना करना पड़ा है कि अगर कोई कंट्री है वो ऑब्वियसली डिमांड करती है कि कोई ऐसी स्टेबिलिटी, मतलब कोई उसको कोई स्टेबिलिटी चाहिए कि एटलीस्ट 5 ईयर आप बोलेंगे गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए आई है, तो फिर वो जाके प्लानिंग उस हिसाब से होती है। तो ये तो बिग वेलकम होगा, आई थिंक बिग वेलकम, गुड। मार्केट तो उसे बिल्कुल पॉजिटिवली लेगी इस चीज को, इलेक्शन अगर अनाउंस होते हैं तो इससे प्लानिंग ऑब्वियसली सामने आती है, इससे थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आती है कि अब गवर्नमेंट 5 साल के लिए आएगी तो कुछ शायद प्लानिंग हो। तो उस सेंस में तो बिल्कुल मार्केट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसको पॉजिटिवली लेगी अगर इलेक्शंस होते हैं। ओके। अच्छा, आईएमएफ के प्रोग्राम पे आपने कमेंट किया था कि मोस्ट लाइकली ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें रिसीव हो जाएगी नवंबर, क्योंकि नंबर्स जो हैं या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफी हद तक अचीव हुए हैं। तो उसकी वैसे प्रोबेबिलिटी आप क्या असाइन करेंगे? सर आईएमएफ के देखें टारगेट्स तो अच्छे खासे मीट हो गए हैं बिल्कुल। मतलब कि जो फिजिकल साइड पे मीट हो गए हैं, अभी उन्होंने गैस प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं, टैरिफ भी उन्होंने बढ़ा दिया था। तो अगर हम वैसे देखें तो हमने सारी चीजें मीट कर ली हैं, तो देयर इज नो रीजन के आईएमएफ की अभी जो मीटिंग, अभी जो टीम आएगी वो व्हाई दे शुडंट कंटिन्यू और नेगोशिएशन विद अस, बिकॉज हम लोगों ने तो अपनी हिसाब से जो भी उनकी चीजें थी, हमने टारगेट्स पूरे किए हैं, हमने गैस प्राइसेस बढ़ा दिए, हमने ग्रेड के रेट्स बढ़ा दिए, हमने और भी मतलब जो भी उन्होंने कहा था, मोस्टली करेंसी भी हमने 1.2% ऑफ द ओपन मार्केट रख ली है जो उन्होंने कहा था कि रखना है। तो उस एंगल से तो हमने पूरा होमवर्क करके इस बार हम जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा होगा कि पिछले जो 3-4 महीने पहले जो रिव्यूज होते थे जब पुरानी गवर्नमेंट थी, तो उसमें कभी कभी होता था कि हम लोग अपनी होमवर्क के साथ नहीं जाते थे, फिर वो लोग कुछ मना कर देते थे। लेकिन इस बार तो आई थिंक सारा होमवर्क किया हुआ है हमने। तो इस बार देयर इज नो रीजन व्हाई आईएमएफ शुडंट मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। अगर वो कोई नई चीज अभी ले आते हैं मीटिंग में, वो एक अलग चीज है कि अगर ऑब्वियसली कोई नई शरायत रख दें अभी सेकंड को, अभी जब आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई हर्डल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इन नेगोशिएशंस में, और ये बिल्कुल स्मूथली गुजर जाने चाहिए इंशाल्लाह। चलिए, जबरदस्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजी एंड आपके बड़े चले अच्छे मार्केट की चले, आउटलुक थैंक यू वेरी मच सर। देने का। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी व्यूअर्स, मच सर। अगले अगले मंथ हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।